Good evening once again to everyone, and we welcome you to the second session of NAP Delhi. So I am Rahul, and with me my co-host Mr. Yogesh Taneja. So we will be taking you through the assignment of the last session, and then today, as I discussed, for the benefit of members who have recently joined us, I am just repeating the layout of the today's session. We'll be starting with the assignment, a quick demonstration of the assignment. Then we'll be taking you through the Vlookup function and HLOOKUP function as a query came to us regarding HLOOKUP. So we'll be covering HLOOKUP and few more Excel functions we'll try to cover up as time permits. And we'll be taking your queries, the most important aspect of this workshop. So we'll maintain the same sequence what we covered the way we covered last time. We'll be starting assignment with the mail merge, then we'll be going to pivot tables. So over to Yogesh Bhaiya. Okay, yeah, thank you and welcome everyone. मेल मर्ज हमने चेक किया तो कुछ लोगों से मैं पहले बात करना चाहूँगा, लाइक कृष्णा जी. संगीता मैम प्लीज अनम्यूट कृष्णा. देयर इज वन पार्टिसिपेंट विद द नेम ऑफ कृष्णा. हेलो हेलो. यस सर. हेलो. हाँ, कृष्णा लाइन पे है. हाँ कृष्णा जी, आपने जो असाइनमेंट भेजा था मेल मर्ज का, उसमें आपने लास्ट स्टेप नहीं कंप्लीट किया क्या? सर मैंने पहले क्या किया कि लेटर लिख दिया और उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे आपने बताया था, और मेल मेन्यू में जाके वो नहीं, वो सब तो ठीक है, लगाई आपने. हाँ जी. आपने फील्ड्स तक तो मर्ज किया, लेकिन हाँ जी. लास्ट में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था, लेटर्स क्रिएट करने थे ऑल्ट शिफ्ट एन से, वो स्टेप शायद नहीं किया है. ऑल्ट शिफ्ट एन से, आई थिंक आई हैव नॉट डन दैट. हाँ, तो वो स्टेप आपका एक रह गया था, अदरवाइज बाकी ठीक था. बट सर उसमें सबका अलग अलग लेटर्स आ गया था, तो उसके बाद भी नहीं उसको आया करना होता है. मेरे पास तो आपने जो फाइल भेजी थी उसमें नहीं आया था. उसमें एक ही फाइल थी जिसमें वो मर्ज फील्ड्स दिखा रहा था, बट वो लेटर वाली फाइल आपने नहीं भेजी. फाइल मैंने वो अलग अलग लेटर्स आ गए थे, तो शायद वो फाइल मिसप्लेस हो गई होगी, बट वो किया भी था मैंने. चलिए कोई बात नहीं. हाँ, तो आपका ये था. संगीता मैम, नाउ अनम्यूट साक्षी डालमिया. हेलो. यस, साक्षी डालमिया. हेलो. I think वो है, she is not there. क्योंकि साक्षी डालमिया जो है उनकी कुछ क्वेरी थी. Okay, she is not there. I think you can continue. ओके, तो बाकी मतलब काफी लोग. एक सेकंड, साक्षी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ. Hello. Yes, साक्षी. Sir, am I audible? Yes, now you are audible. आपका शायद मेल भी आया था, कुछ क्वेरी था, और आपका मेल मर्ज तो कुछ भी नहीं आया, मतलब मेरे पास कंप्लीटेड नहीं था. बट सर मैं जब मेलिंग टैब में जाके देख रही थी तो उसमें एड्रेस तो चेंज हुआ था. जो आपने मेरे पास भेजा था उसमें आपकी एक ही फील्ड मर्ज होके आ रही थी, मतलब लेटर नहीं थे. तो आपको कहीं पे डाउट है क्या? क्योंकि आपने लिखा था कि आपको ऑडियो भी क्लियर नहीं था लास्ट टाइम. यस सर, मुझे ना जैसे मैंने मेंशन किया था अपनी मेल में, मुझे एक बार रिपीट चाहिए था दोनों टॉपिक्स पे वर्बली, सो दैट मुझे एक बार रिवीजन हो जाए और मैं फिर से सही से कर सकूं, बिकॉज कुछ स्टेप्स मैं भूल गई थी. ओके, देखिए मेल मर्ज का मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए भी और सबके लिए, कि सबसे पहले तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, उसको उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेटर लिखना है वो लिख के सेव कर लीजिए. ठीक है. अब आपको और एक एक्सेल में आप डेटाबेस बना लीजिए, जिनको वो लेटर्स भेजने हैं उनके नाम, एड्रेसेस वगैरह, जो भी फील्ड्स आपको चाहिए लेटर में. अब
उस वर्ड डॉक्यूमेंट में रह के आप मेलिंग्स टैब में जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज, उसके अंदर आता है स्टार्ट मेल मर्ज सब मेन्यू, स्टार्ट मेल मर्ज ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके अंदर एक आता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। उस पे जब आप एंटर करेंगे तो वो पूछता है कि आपको लेटर बनाने हैं कि ईमेल बनाना है। बाय डिफॉल्ट जो आपका कर्सर रहेगा वो लेटर रेडियो बटन्स पे ही रहता है। टैप करके नेक्स्ट करके स्टार्ट इन डॉक्यूमेंट आता है, उस पे एंटर करेंगे। वो पूछता है कि यूज द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या यूज फ्रॉम टेम्पलेट, तो एग्जिस्टिंग रेडियो बटन ही चेक रहता है। टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ब्राउज कर बोलता है नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, उस पे एंटर करेंगे तो फिर ऑप्शंस आते हैं। रेडियो बटन आपका बाय डिफॉल्ट जो चेक रहता है वो आता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, उसी को ही चेक रहने देना है। टैप करेंगे तो आएगा ब्राउज लिंक। ब्राउज करके जब आप फाइल को ब्राउज कर लेंगे, ओपन कर लेंगे फाइनली, और एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वो शीट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि कौन सी शीट में आपकी डेटा है, शीट 1 2 3, तो जिसमें भी शीट में है वो सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लेंगे फाइनली। तो आपका कर्सर वापस डॉक्यूमेंट में आ जाता है। अब बारी आती है आपको फील्ड्स मर्ज करने के लिए। जिस पोजीशन पे आपको जो फील्ड मर्ज करनी है कर्सर वहां पे रखिए, ऑल्ट शिफ्ट एफ करेंगे। ये कमांड है फील्ड्स मर्ज करने के लिए। ऑल्ट शिफ्ट एफ करते ही आपको फील्ड्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो फील्ड चाहिए उस पर एंटर करिए, फिर नेक्स्ट कर्सर प्लेस करिए जिस पोजीशन पे आपको चाहिए। इसी तरह से आप एक एक फील्ड को मर्ज कर लेंगे। जब सारी फील्ड्स आपने मर्ज कर ली तो आपको लेटर क्रिएट करने हैं सबके अलग अलग। उसके लिए आप एक कमांड यूज करेंगे ऑल्ट शिफ्ट एन। जैसे ही आप ये कमांड यूज करेंगे तो पूछेगा कि ऑल रेडियो बटन या कुछ सिलेक्टेड बनाने हैं कहाँ से कहाँ तक। तो अगर आपको सबको ही भेजना है तो बाय डिफॉल्ट ऑल पे ही रहता है, उसी पे एंटर कर दीजिए। आपके लेटर्स एक फाइल में बन के आ जाएंगे सामने अलग अलग पेज में। उस फाइल को आप सेव कर लीजिए और फिर आप प्रिंट कर सकते हैं या जैसे भी आपको भेजना है वो भेज सकते हैं। ये प्रोसेस है पूरा मेल मर्ज का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर यही वाला स्टेप मैंने जो आप बता रहे थे, ये डाउट सर ये भी किया था मैंने, वो फाइल शायद नहीं आई होगी आपके पास तक। हाँ तो मेरे को आपको वो तो फाइल भेजनी थी, अगर मैंने आपको आप वही भेजी। कहेंगे तो दोबारा सेंड कर दूंगा नहीं मैं। नहीं वो कोई इशू नहीं है, बस मेरे को वो डाउट था कि आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था। So objective is to make you learn. बस हाँ। उसी के लिए we are sharing again and again. या श्योर सर। तो मेरा जो मेल मर्ज का फीडबैक यही है कि मतलब बाकी सब ऑलमोस्ट काफी लोगों का ठीक था, मतलब पूरा था। ये 2-3 केसेस जो मेरे को याद थे कृष्णा के नाम से और साक्षी, तो आप ये एक बार दोबारा ट्राई करिएगा। होप अब आपको क्लियर होगा ये। ठीक है राहुल, मेल मर्ज का तो मेरी तरफ से क्लियर है। एक बार कैसे डेमो करके हाँ। दिखा दें या विल भी सर डेमो हम करेंगे आज। सर वो रवि इज रेजिंग हैंड। ओके, अनम्यूट हिम। Yes, बाकियों को म्यूट कर दो ओके हेलो रवि, आर यू देयर? यस सर आई एम डूइंग। बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। यस अनम्यूट या रवि, अनम्यूट हो गया सर। रवि हाँ सर, रवि रवि आपकी को कोई क्वेरी अनम्यूट है? हो गया। हेलो मैम एक्चुअली आपने मुझे अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा था, बट इवन आई हैड रेज्ड yeah, my question was if I have to send a bulk mail to someone with an attachment, हैंड को अपने को वीडियो के सामने हाथ ऊपर करना है क्या? नहीं नहीं, रेज योर हैंड की कमांड है ऑल्ट वाई। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अभी मत करिएगा। यस, समवन इज आस्किंग वन क्वेरी। yeah, my query was अगर हमें bulk mail भेजना है with an attachment, is there a way of नॉट पॉसिबल। सेंडिंग मेल bulk mails with the help of mail merge is possible, but sending an attachment in that mail is not possible with mail merge. okay, all right. उसके लिए फिर आपको थोड़ा मैक्रो एक्सेल के वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, वो इस क्लास का तो मतलब अभी नहीं है उसमें। Sure. Yeah. yes Ravi, can you
Ravi ji. बहुत सारे लोग अनम्यूटेड हैं. Can I mute all? हम आप बाकी सबको म्यूट करके रवि को अनम्यूट करिए. Audio set. Mute currently muted button active. Space mute currently. Alt mute currently unmuted button activate. Press. Space. Mute currently unmuted button activate. Press space. Ravi, can you hear us, Ravi ji? Zoom meeting ID colon 9. हाँ unmute. रवि अगर आप नहीं बोल मतलब म्यूट कर पा रहे हैं एक बार आप भी Alt A करिए तो हो सकता है आपकी तरफ से अनम्यूट हो जाए वो. No sir, again unmute कर दिया इन्होंने. Alt mute currently unmuted button activate. हाँ रवि जी yes, बोलिए. Now mute. रवि आपकी आवाज नहीं आ रही है. So we'll go to the Sir, next one. we can go Emmanuel. हाँ हाँ मैम उनको हाँ अनम्यूट. Emmanuel. Amit Pahuja left the meeting. हाँ okay. यस इमानुल आपकी कोई क्वेरी. हेलो सर. हाँ बोलिए. Sir, I have a small query here, sir. How to make a pivot table? Okay, I will be covering that pivot table. I'll be covering with a demonstration, quick demonstration. Okay, At present only mail merge queries please. Pivot table we will demonstrate. Mail merge query अगर कोई है तो. Okay. Sir, I have one more query, sir. Yes. Regarding mail merge. I have go to insert mail merge tab. In that tab, step by step I have followed, but I have done correctly or not. I have a small confusion, sir. नहीं, if you got your final letters then it's okay, otherwise there is some problem. Okay. Later will be accepted also, sir. In that Excel list it will No, be. letter will be in the Word format, no? Okay. Okay, next query. Anyone? I think let's move to the demonstration. Yeah, pivot table demonstration. Then at last we will take the queries. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. I'm me from Gujarat. Yes. I have query regarding JAWS shortcut because I am a user of NVDA. So I done my all assignments, but I have only left 2 questions regarding shortcut keys in mail merge. So can you repeat the shortcuts of mail merge? Alt Shift F and Alt Shift N both are working with NVDA as well. Okay. I don't know about that, so I am little bit confused. So I left 2 questions, and other question is on Excel. In Excel, we can row header shortcut is with JAWS Control Insert R. Yes. Insert or Control R. With JAWS. On NVDA. With NVDA, I guess it's Insert Alt R. No. Insert Shift or. Alt R. Okay, No. you, Insert Shift or. Okay, Insert Shift R. Sir, it is Alt is not work there. Insert Shift C. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, and Rahul now proceed for the pivot Okay. table. Excuse me, sir. Yes. Okay. Sir, I have one query. Actually, it was mentioned in the mail, I guess. Can you tell how to send email through mail merge? Like I have configured Outlook Express. We will tell you. We will demonstrate. We will demonstrate. And sir, can you repeat the command for row and column header with the help of JAWS? The command for row and Insert column. Alt Control R. Okay. See, just remember Insert Alt Control. These are the 3 keys, and for rows it is R, and for columns it is C.
Okay, insert alt control. Okay, I have written alt shift control. Oh, I have written it. No problem. Basically, it is for NVDA. So NVDA is insert shift R and insert shift C. So you are asking about JAWS. So Yes, yes. insert alt control R for rows and insert alt control C for columns. Okay. Yogesh sir, Yes. sorry for disturbing. Now we need to submit our assignment because No. okay. See, assignment was to be submitted day before yesterday, but if you have any queries from assignment, you can ask us, okay? So you can, meanwhile, when we are demonstrating, you can go through your assignment questions, and if you have any doubt, you can ask us. And moreover, we are giving you the demonstration of complete assignment. So all your queries will be answered. So, shall I start with pivot table? Yes. Mail must so we will give later. Sending emails wala. Okay. So I'm just sharing my screen. Press space bar. Meeting controls. So is my JAWS audible? Yes. Mute currently. Task switching. Zoom cloud. Gmail inbox. Microsoft Excel demo data. Microsoft Excel. Demo data.xlsx. ATM data. Selected range. A1. SR.ho. So I'm using the same sheet which we have given you for the assignment. 1. A2. So data set may be different, but column headers remains the same. ATM name C1. City. Started. Onsite / offsite F1. Okay, let me open that. Run dialog. Desktop. PC alert 5%. Microsoft Excel demo meeting controls. Mute audio setting. Start videos. 6. Open pause button. New shift pause. New alert. I request participants not to raise hand as of now. Your JAWS is not audible. Yeah, my JAWS is not audible. I'm just fixing it. Okay, so now my JAWS should be audible to you. There is some issue with the JAWS. Just fixing it up. PC. Okay. Draft Excel assigned demo data. Gmail inbox 3. Pivot table data. So now my JAWS is audible. Yes. Okay. So I've just opened up my Excel file. Alert. ME3 has joined the meeting. Bang A1. And Tasks with meeting controls. 3. Meeting controls. Just pause. Alert. iPhone Sana Samad has entered the waiting room. Okay. So the first thing was in the assignment that तुम्हारा screen share फिर रुक Screen share is stopped. I think now everything should be fine. Task switching 3. Pivot table data to move to an item. Press the arrow. Microsoft Excel. The first thing was data was given to you, and from that data you had to create a pivot table. Pro ID. So Bang. the first thing what we have to do is to create a pivot table is select entire data. So to select the entire data, we can press Control A. Select A1. Bang. C193. Semi-urban. So my entire data is now selected, and I will go to Insert menu for inserting pivot table. Virtual ribbons. Home tab. Insert tab. Lower alert. Chart sub link sub text sub table sub pivot table split button. Press enter or space bar for more options. And under Insert tab, I'll go to Tables. Table sub. And under Tables, I'll go to Pivot Table. Pivot table. Menu. Leaving menus. Pivot table. Menu. Create pivot table dialog. Choose the data that you want to analyze. Table / range. Edit data. $A, $1, C, $190. So automatically in this edit box, a dialog box has opened up, and in that dialog box there is an edit box in which automatically the range which we selected is appearing. New worksheet radio button to change this. So we'll choose for new worksheet. OK button and to activate. Press. We'll hit enter on OK button. Sheet 1 blank A3. So now a new sheet is inserted blank A3. in our Excel file, and the sheet on the left side of the sheet there is a window, there is a pane where all pivot table fields are listed. So to navigate to that window, we'll press F6. Pivot table field list layout button drop down has pop up. So we have navigated to pivot table list layout dialog box, and over there Bang. We'll press tab, and as soon as I pressed tab once, I heard the first header of my data, that was bank. No of ATMS. Number of ATMS.
Urban/rural. And third one is urban and rural. So 3 column headers were there. So this was the first part to create a pivot table. Now we wanted a bank wise report of ATMs in urban and semi-urban category. That banks should come in rows and urban or semi-urban, two things should come in column. So the next questions were in the assignment: which field will be added to row label, which field added to column label, and which field added to values. So there are only 3 fields and we have to make use of all these 3 fields. So we want banks in row label, so we'll press application key on bank. Alert, Krishna Sarwat has left the meeting context menu. We'll go to Alert, Krishna Sarwat has joined. add to row labels. Add to row labels A. So by pressing down arrow, I've come to add to row labels. I'll Leaving press menus. down arrow. Bank. No of 80. I've Urban/rural. pressed twice down arrow. So we will we have come to Blank. urban/semi-urban. Urban/. And we will press application key over here also. Now Context we menu. want it to be column Add to report labels. filter. So we will quickly press down arrow and move to the option add to column labels. Add to row. And Add to we'll column press labels enter A. here. Leaving menus. Urban/rural. Now No of we want ATMs. to count number of ATMs in this area. So we will press application key again. Since Context we want menu. to count Add to it, report. so we'll move to add to values. Add to So values I've A. pressed up arrow and down arrow using up arrow and down arrow keys. I've come to add to values. I'll press enter here. Leaving menus. No of And ATMs. our pivot table report now should be ready, but we want to see what property is assigned to which value. So we will not press F6 so far. We'll remain in this dialog box itself. We'll use the tab key to listen what information we have got now in this dialog box. Urban/rural. Bank button So menu. one Press is space to add. bank button menu. That means bank has been added to a particular thing, whether in row or column. We know we had added it to row, so it is telling us bank. Count of no of ATMs button menu. Press space to activate. Second thing is Urban/rural. urban/rural. So we have added it to column labels, so that Alert. J and audible to us. Now the very important thing which I want to show you meeting is control. Count of no I of have pressed ATMs. tab and I have come to count of Alert. Harshini. ATM. So we have Alert, added Harshini. it to the values. Alert. So J. what calculation is happening on that field? It is Alert. J. count. Okay. So if it would have been numbers, some other calculation would have been performed on this. So whatsoever whatsoever property or calculation will be assigned to it, you can hear it from check it from here. Okay. So we want it to be counted, so it is already counting. So we need not to do anything. We'll go back to our Excel sheet. We'll press Shift F6 and see whether our data is created or not created. Count of no of I ATMs have A3. come to Excel, the workbook area, worksheet area by pressing Shift F6. From the pivot field list to, I have come back to worksheet, and my cursor was in A3. So now it is in, presently also it is in A3 where I left it is. So I'll press down arrow. Row labels A4. It has row labels. So let me see what is there in row labels. Aditya Birla Idea Payments Bank. Airtel Payments Bank. Allahabad Bank. A7. So all American banks Express. have now come to row labels. Allahabad Bank. A7. Airtel Payment. Count of no Now of ATM. let me go to back to A3. Count of no. Row labels A4. Okay, my data is starting from A4, so I press A. I have come to A3, and now I have pressed down arrow. My data is starting from A4, so I'll press right arrow. Rural B4. Okay, so we have added rurals, urban, semi-urban, Semi-urban. Urban. in column labels. So it has come to column labels. You can see it. Row label. Rural B4. Semi-urban C. Urban D4. And Grand total grand E4. total. Okay, so this has also come up, and row labels. Rural B4. I'll press down arrow to see. Blank B4. Okay, Aditya Birla first Idea I Payment. will set the row headers. So the command is insert alt control R. Alert. Guest has entered. Setting row titles column range to Okay, A. so I have set my row labels.
So Blank. now let me navigate in different rows. I'm bringing my cursor 1, C5. in the column Alert. Guest. and I'm moving down. Airtel. Alert. Guest has joined. Airtel Payments Bank. So 1, in C. row header it is Payment Bank. Allowed. Next is Allahabad. American Express. So 1, it is C8. reading. Andhra Bank. 1, C9. AU Small Finance Bank So it is Limited. 1, reading C10. the Row labels. semi-urban Semi-urban. branches. Okay. Let me set the column labels also quickly. Row. Count of no of ATMS. Row labels. Semi-urban C4. Command is insert alt control C. Alert. Krishna Sarowat is left. Aditya Birla. Row labels. Semi-alert. Krishna. So I'm just setting it. Insert alt control C. I'm pressing. Setting So column it's titles. done. Now let's just quickly see. Row. Aditya Airtel. Rural. Blank. So we'll Semi-urban. be seeing the data of one of the banks. American Express. So we'll Andhra be Bank. checking the data of Andhra Bank and I'll press right arrow. Rural. So in 1, Andhra Bank D9. there is one rural branch, Semi-urban. one 1, semi-urban C9. branch Urban. and 1, one D9. urban branch. Grand And total. total 3, is E9. 3. Okay. So we'll look for one of the bank where there is no Roll. 80. Airtel Pay. Rural. Okay. Blank. D6. So Row we have labels. come to Airtel Pay. Airtel payment banks where there is Rural. no Blank. ATM available in rural. Okay. So in rural, in areas where there was no information available, the question was to add a comment which says no data. Okay. So just to show how we'll do that, we'll press application key quickly Menu. and Copy we'll to move from to items. Press. pivot table options. Leaving menus. I have Pivot table. Up. used the Type in shortcut text. O to go to the pivot table options, and when I pressed O, automatically pivot table option dialog box opened up. I'll press Alt S. For empty cells, show checkbox. Not checked. Alt S is the shortcut to go to the show for empty text. So we could have used in last session we had seen that we press tab. So one can use tab also, but they say that to learn Excel we need to use it. Okay, so the only way to learn Excel is to use Excel and improve the efficiency by using it. So since I've been using this feature since last 1 week, so I remember that the short key is Alt S. So I'll press spacebar over here. Checked. And now this checkbox is checked. I'll press tab. For empty cells, show And edit. now Type there in is text. an edit box. I'll type no data. Blank. Slower. Characters. Blank. No N-O-D-A-T-A. data type, and I can use tab key to navigate to the OK button. So in this case, default button is OK button. I'll press enter. Enter. So let us see. Allahabad Bank. Roll. F8. Grand So we total. were in Andhra Bank. Let's go to Andhra Bank quickly. Roll. Aditya. Airtel. Allahabad. Andhra Bank. Rural. Alert. MA3 has roll. American and rural. 1. Roll. Rural. Okay. No data. Roll labels. So American we are checking American Express. Allahabad. So in American Express, let's go to the right. Rural. So in No rural, data. there is no data, no ATM or no branch is available. Semi-urban. 1. Semi-urban one. C8. Urban. And No in data. D8. urban, there is Urban. no data. Grand total. And the total 1. is E8. 1. Okay. So this is how we were supposed to add no data to the pivot table. There are many more functions in pivot table. But Alert. this is MA3. what we told you is very basic. Now you can explore it yourself, and after this session you can explore about pivot table. And Alert. Me. this is the basic orientation how to navigate with Alert. JAWS. MA3. Now since we have told you how to navigate, you can now explore various options in pivot table. One very important thing which I would like to tell you or give you hint what you can explore is you can add one field multiple times to values and perform multiple functions to it. Moreover, you can go to the ribbons, and in ribbons you will see that 2 more additional ribbons are added. Once you create a pivot table, 2 additional ribbons are added. Okay, so let's just see that. Ribbon. Lower ribbon. Pivot table name. Edit. Pivot virtual ribbons. Options tab to move. Developer tab. Option.
Design tab to So one options. is the options tab. Design And tab next to one move is through the the controls on design this ribbon. tab. Alert here in Okay. option lower ribbon pivot table active fields group sub menu sort sub menu data sub menu action sub menu tool sub menu show So slash like hide this, sub. there are several options in this, so you can explore it yourself and learn it yourself. And in case of queries, you can write an email to us, so we'll help you. So this was all about the assignment. So any queries? So we No, are no, now. no, no, Rahul, move Ah. to VLOOKUP. Queries we will take at the end. Okay. Escape leaving menus PC. So this was all about the assignment. We covered mail merge, we covered pivot table, a quick demonstration, and now we are moving to the VLOOKUP function in Excel. Data selected grid. Bang A Aditya Burlide. So I'm just closing this file. Control W Microsoft Alt N. Demo data.xlsx ATM data. Sheet 4 blank. Someone JAWS is disturbing. Selected AT Sheet 4 ATM data. Sangeeta ma'am, can we mute all participants? Someone is unmuted. Sheet 4 selected ATM ID ATPC H lookup selected sheet 4 blank contact D delete button enter. Okay, so VLOOKUP data employee ID space speech on demand. okay, so let's discuss about the theoretical aspect of VLOOKUP. What is VLOOKUP? So VLOOKUP and HLOOKUP are two very prominent functions, very widely used functions in Excel. Basically, we'll be discussing at length about the VLOOKUP today. So VLOOKUP basically it's a data to look up the data. Okay, as the function name suggests, lookup. So it looks up the data. आप अगर कुछ डेटा ढूंढना चाहें और आपके पास you have a partial data from a database and you want to complete that data, so you can use the VLOOKUP function. V stands for vertical. Okay, so it will vertically look up your data. It will find the data in columns. Okay, from one column to another column, it can find data for you. So this is about lookup. Now let's understand the practical aspect of VLOOKUP. Say you have a list of employees, employee ID, employee name. In one database, in one sheet, you have a list of employees which gives you employee ID and employee name. And in another sheet, you have employee ID and mobile number. But the employee ID in both the sheets are same. But where you have employee ID and employee name, over there you have 4,000 rows. But where you have employee ID and mobile number, you only have 2,000 columns, rows. Okay, 2,000 rows. But these 2,000 rows are very well present in those 4,000. Now, what you want to do is you want to find out the name of the employee in front of employee ID. So one thing you can do is press Ctrl F, copy, paste, and you can use that. But that will take days and days, okay, to match that data. So to do that data quickly, to match that data instantly, Excel provides a very powerful tool called VLOOKUP. So you can tell Excel that, see, employee ID is common across both the sheets, and we want to match both the sheets and get the employee name in front of our data. So this in organizations, it is used very widely, and there could be millions of cases where VLOOKUP can be used. So we'll be seeing how to use VLOOKUP with the help of very small data we have in front of us. We have kept data very small because we want you to visualize and understand it easily. And what we will be seeing in this, we will be seeing different components of VLOOKUP. Number one, how to put VLOOKUP in different sheets, from one sheet to a different sheet, and we can put VLOOKUP in different files also.
And yes, very basic example, we can put VLOOKUP in same sheet also. Okay, so we'll be seeing two aspects. One is applying VLOOKUP in a same sheet where our data is, and applying VLOOKUP in a different sheet. Okay, so before proceeding, let me try to explain you different components of VLOOKUP. What are the different parts of VLOOKUP? VLOOKUP has got 4 parts, exactly 5 parts, but very important 4 parts. So we'll go one by one. The first part is function itself. Function itself is VLOOKUP. So to enter the formula in Excel, we use equals key. So we'll use equals wherever we want to insert the formula. So equals VLOOKUP. Function name will type VLOOKUP, VLOOKUP. Then we'll open the bracket. This was the first part, okay, writing the function name. Now we are moving to the second part. The second part is what to VLOOKUP, what to find. So what to find, will tell Excel what to find. Say in the data which I will be demonstrating you, in that we have employee ID and employee name. So the employee ID is 25. Okay, we are presuming that one of the employee ID is 25. So we will, what we want to find, we want to find 25 out. Okay, so we will write equals VLOOKUP, bracket open, bracket shift plus 9 and shift plus 0 bracket will use. Okay, so left parent JAWS will announce it as, so bracket open, we'll write 25 to 5, and every now every argument or every component has to be separated by comma. Okay, once the bracket is open, every components need to be separated by comma. So I'm just repeating it again. Equals VLOOKUP, then bracket open, then 25. 25 is the value which we want to find, comma, from where we want to find. So we need to tell the Excel from where we will find 25. So say we have 2 columns. One is the employee ID and employee name, and data is from A1 to B6. Okay, there are 5 rows, 6 rows. The first row is the header row, so I'm not counting that. So we have 5 rows with data A1 to B6. So we'll tell Excel equals VLOOKUP, bracket open, 25 A1 colon B6. So we have told the Excel that our data is from A1 to B6. So please find 25 from A1 to B6. This was the third part. Okay, this was the third part, from where to find the data. So now let's go to the fourth part. Now there are data, the data is arranged in 2 columns. The first column is A, the second column is B. Now VLOOKUP doesn't understand A, B, C, D. VLOOKUP understands 1, 2, 3, 4. Okay, so in VLOOKUP, column A is 1 and column B is 2. If data would have been column C and starting point would have been column 1, column A, so C could have been number 3 as per Excel. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. अगर आपका डेटा, आपके पास अगर 3 कॉलम्स में डेटा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम जो है वो सी कॉलम में आया, एंड विच इज एम्प्लॉय आईडी इज नंबर 1, डिपार्टमेंट नेम इज नंबर 2, एम्प्लॉय नेम इज नंबर 3. तो एक्सेल में सी वुड हैव बीन नंबर 3. Okay, so but in this case, in this example, we are taking A and B itself. So number 2 we will take. I am again repeating the formula because I have explained a lot. So let's connect again. Equals VLOOKUP, bracket open, 25. That means what to find. 25 we are finding. From where to find? We are finding from A1 to B6. So equals VLOOKUP 25 comma A1 colon B6. This is the third part. Now let's go then comma 2. Okay, comma 2. So we are finding in second column. So comma 2. This is the fourth part, and the last part of the formula will again write comma, and there are 2 values in the fifth part, which is 0 and 1. True or false. Okay, so
0 or 1, when we write 0 over here, 0 means exact match. मतलब अगर 25 लिखा है तो 25 एम्प्लॉय आईडी के सामने जो नाम है मुझे वही चाहिए. 25 के सामने अगर सुरेश है, so I want सुरेश as a result. और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, if I write 1 over here and 25 is not found, or 625 is found, 125 is found, 325 is found, nearest value Excel will look and provide me data. But VLOOKUP का फिर purpose defeat हो जाएगा because we'll not get the exact data. So generally we use यहाँ पे function 0 to tell the Excel that we want exact match. Okay, so this is a very basic example of VLOOKUP. 5 parts of VLOOKUP. Number 1, function. Number 2, what to find. Number 3, where to find. Number 4, what is the sequence number, what data we are finding. And number 5, it is true or false, and we want approximate match or complete match. So complete match is 0 and approximate match is 1, and then we will close the bracket. Okay, so this was the theoretical description of VLOOKUP. Now let's just quickly look the practical example of VLOOKUP. Full speech. Employee ID A1. So I have a data in front of me. Let's see what data is available. So I have come to the top of the sheet, and my cursor is in A1, and I'll press right arrow. Name B1. In B column, name is there. Department C1. And in third column, department is there. Appraisal score D1. And in fourth column, appraisal score is there. Grade E1. And Blank. fifth column contains the grade on the basis of appraisal score. And let me see data कहाँ तक मेरे पास है. Employee BE6. Employee BE6. E6 तक ये data मेरे पास available है. A1 to E6. Now let me see what all are the employee IDs. I will quickly go to the top. Employee 25, 35. So employee IDs are 25, 35, 45, 55, A5. 55, 65, A6. Blank. Now let me see 25 जो employee ID है उसका नाम क्या है. 20 Anish B2. 25 employee ID का नाम है अनीश. 35 Dipesh D3. और 35 वाली जो employee ID है उसका नाम है दीपेश. So now let me see how to do VLOOKUP. Know the employee ID of Anish and Dipesh. So I will come to the blank cell in this worksheet. B blank E8. So Blank I have A8. come to एक्सक्यूज मी yeah. सर बीच में ऑडियो कट गया था, लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज, कॉलम बताने के बाद. Now very difficult to tell कि कहाँ पे कटा था ऑडियो. नहीं, अभी लास्ट जब आपने पूरा डिस्क्राइब किया ना टेबल. मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ अभी जब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ. So you will be able to hear, understand everything. ठीक है. And हम क्वेरीज का टाइम देंगे. एट दैट टाइम आप क्वेरीज पूछ लेना अगर कुछ रह जाए तो, है ना. थैंक यू सर. तो मैं A8 में आ गया. A8 पे आई विल राइट दी फॉर्मूला. मेरे को सब पता है कि मेरा डेटा कहाँ से कहाँ तक है एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड. सो मेरे आई रिमेम्बर एम्प्लॉय आईडी 35. मुझे देखना है कि 35 एम्प्लॉय आईडी में क्या अवेलेबल है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय आईडी ऑफ 35. सो आई विल राइट द फॉर्मूला. सो Characters. मैंने इक्वल्स लिखा. यहाँ पे मैं लिखूंगा VLOOKUP. V L O O K U P. शिफ्ट और 9 यूज करके लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे. Left parent. और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रैकेट ओपन हो गया, VLOOKUP हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया. मैंने आपको इसके बाद बताया था व्हाट टू फाइंड. तो व्हाट टू फाइंड मतलब हमें 35 फाइंड करना है. तो आई विल टाइप Numlock off. 35 Numlock on. 3 फ्रॉम 5. वेयर टू फाइंड. तो 35 टाइप कर दिया. इसके बाद कॉमा लगाएंगे. कॉमा लगा दिया. अब उसके बाद फ्रॉम वेयर टू फाइंड. तो वेयर टू फाइंड में हमें पता है कि A से लेके E6 तक हमारा डेटा है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 कोलन A1 E6 colon E6. कॉमा तो ये मैंने एक्सेल को बता दिया कहां से फाइंड करना है. नाउ व्हाट नंबर मतलब व्हाट इज द नंबर. एम्प्लॉय आईडी का नंबर था नंबर 1 क्योंकि वो सबसे पहले है. दूसरा जो कॉलम था उसमें था एम्प्लॉय नेम. तो वी आर फाइंडिंग एम्प्लॉय नेम. तो एम्प्लॉय नेम इज नंबर 2.
So I will write 2 और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा, क्योंकि हर कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं हम कॉमा से. ओके, कॉमा, देन we want exact match. We don't want any nearest match. We want exact match. So I will write 0 यहाँ पर. I will write 0 और 0 टाइप करके मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा. शिफ्ट और 0 से ब्रैकेट क्लोज एंड वी विल प्रेस एंटर. लेट अस सी. एंटर प्रेस किया तो मेरा नेक्स्ट कर्सर चला गया. हम A8 में थे, so we'll press up arrow. So 35 जो नंबर था वो दीपेश का था. अब मैं इस फॉर्मूला को एडिट कर लेता हूं. मैं यहाँ पर F2 edit top F O K U P left 5 25 की जगह 35 की जगह I'll write 45. 3 I've written 45 and I'll press enter. Enter blank A9. So Yogesh has formula 45 A8. employee ID was of Yogesh. क्या ऐसा था? मैं देख लेता हूँ एक बार अपने डेटा में जाके. 45 A4 में A4 45 है और B4 में Yogesh B4 योगेश है. IT C4 ये तो हमने एम्प्लॉय का नाम ढूंढ लिया. नाउ इन सी कॉलम, ए कॉलम में आईडी, बी कॉलम में नेम, सी कॉलम में डिपार्टमेंट. नाउ यू वांट टू लुक अप द डिपार्टमेंट आल्सो. Home Sandeep B5 Milish blank B9 Home Yogesh has formula. आपको डिपार्टमेंट ढूंढना है तो मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट ढूंढने के लिए एंड आई एम रिपीटिंग इट सो दैट इट हैज मोर क्लैरिटी. सो मैं फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल्स वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करूंगा और एम्प्लॉय आईडी 45 जो कि योगेश है उनकी एम्प्लॉय आईडी लिख दूंगा यहाँ पर 45 कॉमा करूंगा. A1 E6 लिखूंगा. A1 कोलन E6 कॉमा करूंगा and we know that the department is in C column. So A1 is 1, B is 2, C is 3. So I'll write 3 over here, comma 0 to tell Excel that we want exact match. 0 लिखूंगा और bracket will close the bracket now and we'll press enter. Enter blank A9. IT has formula A8. Now IT was the department for Yogesh and Yogesh ID was 45. So now we can see that IT has come. This is how we do VLOOKUP in a same sheet. Okay, and we do the VLOOKUP when we know the value. Okay, but again that is not the purpose of the VLOOKUP, that we should be knowing the value. We should be knowing where value is. That is important in VLOOKUP. This is not important that what is the value. This was just for the purpose of example so that we could simplify it. Okay, so this is how we do VLOOKUP in a same sheet. Now somebody may ask कि अभी हमने नंबर से ढूंढा, क्या हम नाम से ढूंढ सकते हैं? Can we search something with the help of text? So yes, we can search the text also using VLOOKUP, but in that case text has to be in quotes. Okay, so number के case में we can directly type the number. So anyway, this was the example to look for the VLOOKUP in a single sheet where you know the value. Now let's take a different scenario. Now the scenario is that employee IDs are mentioned in a range of cell in a particular column. Employee ID एक range of cell में rows में different rows में लिखी हुई है. उनके आगे हमें employee ID we have to, in front of employee ID we have to get the required data. So I'll quickly show you how we can do that also. Blank. Employee ID A1. 25. Employee control shift down arrow copied. N 65. Blank A7. Blank A8 pasted. Blank employee ID A8. N 25 A9. Blank A 25. Blank A10. 20. Employee 20. Blank A10. 3. Blank A11. Okay. So अब मेरे पास we have got a data from employee ID A8. 25. 35. 45. Blank. 45 A11. ठीक है. ऊपर we have got 6 records and somebody's microphone is unmuted. Can you just help us by muting your microphone please by pressing Alt A?
Okay. So now we have data from A8 to A11. 35, 20, employee ID, 25, So I will A9. count it from A9, okay, because A8 has got the column header, okay. So I will count it from A9 to A11. Now let's go to the B9 and Blank write the B9. formula over here. So formula was equals Vlookup. Now we'll be making very slight change in the formula. You can observe it yourself. I will write the formula equals Vlookup and bracket open. Now Left parent. we need not to type 25, 35 or 45. We have to tell Excel from where we want to find what. Okay. So A9 में 25 लिखा है. Okay. So the value is available in A9. So we will tell the Excel the reference. Okay. Reference of the cell from where what needs to be find. Okay. So what needs to be find is A9. I will write A9 over here. A. So A9 में 25 लिखा है, so I have written A9. So Excel will automatically pick up 25 from A9 and I will put comma. अब बाकी का फॉर्मूला remains the same. हमने Excel को ये बता दिया क्या ढूंढना है, कहां से ढूंढना है. We'll write the range. Range remains the same. A1 to E6. A1. A1 colon E. ठीक है. रेंज भी हो गई, उसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे. क्या ढूंढना था? एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय नेम. तो एम्प्लॉय नेम बी कॉलम में था, तो उसका नंबर, उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर इज 2. आई विल टाइप 2 ओवर हियर, कॉमा. वी वांट एब्सोल्यूट एग्जैक्ट मैच, तो 0. Right parent. Enter blank B10. Anish as formula B9. अनीश लिखा आ गया. ओके. तो ये एग्जैक्ट मैच हमारा हो गया. अनीश में अनीश वाज एम्प्लॉय आईडी क्या था यहाँ? 25. तो अनीश आ गया. Anish as formula B9 में अनीश का नाम आ गया. Now we can copy paste this formula also, and while copy pasting this formula I will be making an error. I will show you how to correct that error also. तो मैंने copy कर लिया formula. Copied. और Blank B10. paste कर दिया. Pasted. Type as formula तो B10. आ गया. बट मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं है. ओके. So I'll press F2 and read the formula कि कहीं गलती तो नहीं हुई. F2 edit. Top equals lookup left parent A10 comma A2 colon E7 comma 2 comma 0 right formula parent. is equals Vlookup. Left parent A10 comma A2 colon. Right. A10 is बिल्कुल करेक्ट. हमें A10 से ही फाइंड करना है, लेकिन कहां से फाइंड करना है, उसकी रेंज चेंज हो गई है. नाउ इंस्टेड ऑफ A1 to E6, रेंज हैज कम A2 to E7. A2 से लेके E7 तक की रेंज हो गई है, लेकिन हमारी रेंज थी A1 to E6. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फॉर्मूला नेक्स्ट रो में कॉपी पेस्ट किया. सो ऑटोमेटिकली एक्सेल का जो स्मार्ट फंक्शन है उसने हमारी रेंज को, फॉर्मूला रेंज को भी चेंज कर दिया. एक रो नीचे लाए तो फॉर्मूला में भी रेंज एक रो नीचे आ गई, शिफ्ट हो गई. अगर मैं इसे 10 रो नीचे ले जाता तो ये 10 रोज चेंज हो जाती. A1 की जगह A11 हो जाता, A11 to E16 हो जाता. बट वी डोंट वांट दैट. वी वांट रेंज टू बी फिक्स. हमारा डेटा जो सोर्स डेटा है जहां से हमें फाइंड करना है, दैट रेंज शुड बी ऑलवेज फिक्स. सो वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट सिंटैक्स. ओके. सो एब्सोल्यूट फॉर्मूला कहते हैं हम उसे. तो हमें एक्सेल को बताना है कि हम कॉपी पेस्ट करें तो A9 को आप चेंज करके A10 कर देना, बट A1 से लेके E6 जो हमने लिखा था, वी डोंट वांट एनी चेंजेस इन दैट. सो एब्सोल्यूट फंक्शन कैसे हम करते हैं? डॉलर का साइन यूज करके. तो मैं फॉर्मूले को एक बार एडिट कर देता हूं और लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट. Equals lookup left right parent. V L O O K U escape. Anish 25 A9 Anish F2 edit. V O O K U P left 9 comma A. तो जहां से मेरा A1 और E6 जहां मेरा लिखा है, तो मैं A1 के A पे आ गया हूं. एंड आई विल राइट डॉलर ओवर हियर. डॉलर वी कैन पुट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट 4. $1. सो A से पहले भी डॉलर और A के बाद भी डॉलर, फिर 1 colon E. देन E से पहले डॉलर, $6 और E के बाद डॉलर. ओके. सो लेट अस नाउ रीड द फॉर्मूला.
Equals lookup left parent A9 comma $A $1 colon $E $6 comma So 2. now the formula is equals VLOOKUP A9 comma $A $1 comma $E $6 comma 2 comma 0. So we just have added dollar to give absolute referencing. Okay, Excel में हम इसको absolute referencing कहते हैं. So we'll just press enter over here. Enter. Dipesh has formula B10. Anish has formula B9. A9 में मैंने change किया था formula, मैं इसको copy कर लेता हूँ. Copied. Dipesh has pasted. Dipesh has. और Anish has formula B9. B9 में मैंने changes किए थे. B9 में मैंने copy कर लिया formula and I have pasted it in B10. Dipesh blank And I B11. have pasted in B11 also. Pasted. Yogesh has formula तो B11. हमारा डेटा A9 से A11 तक था. अब हमको नाम चाहिए था B9 से B11. So we have got the names from B9 to B11. So let's try to read one of the formulas. So we will read the formula in cell B11. Okay. So I'll press F2 in cell B11. F2 edit. And the formula is Equals lookup left parent A11 comma $A $1 colon $E $6 comma 2 comma 0 right parent. equals VLOOKUP A11 comma $A $1. तो जो रेंज थी, जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग थी, वो हो गई है. ओके, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हैज नाउ हैपेंड एंड wherever you paste this, your value will not change. I will just show you very quickly. I will go to A35. Alert. Control G. Go to dialog. And Reference I will write A35 over here. A35. And press enter. Enter. Blank A35. Blank A35. Employee ID लिख देता हूँ 55. 5. 55. A35. जो फॉर्मूला B11 Alert. B11 में था, उसको कॉपी करके वापस ले आता हूँ यहाँ B35 में. Alert. End. Page up. Blank XFD21. Home. Blank A21. N. 45. A11. Yogesh has formula copied. B11 से फॉर्मूला कॉपी कर लिया. And I will go to B35. For N. Blank B35. And I will paste the formula over here. Pasted. Sandeep has formula. Alert. Guest has left the meeting. 55 was Sandeep has formula B35. Okay. And हम B35 में हम फॉर्मूला F2 करके पढ़ लेते हैं. क्या आया फॉर्मूला? F2 edit. Equals lookup left parent A35 comma $A $1 colon $E $6 comma 2 comma 0 right parent. तो equals A35 और जो सेल जो रेफरेंस था डेटा का A1 से E6 वो चेंज नहीं हुआ, सेल का रेफरेंस चेंज हो गया. So this is all about VLOOKUP, applying VLOOKUP in a single sheet. Similarly, we can apply VLOOKUP in multiple sheets also. वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में, मल्टीपल शीट्स में VLOOKUP कैसे अप्लाई करना है. And we can apply VLOOKUP in multiple workbooks also. So this was very basic about VLOOKUP. VLOOKUP may be variations हैं. If time permits, we'll explore those variations in VLOOKUP also. So now let's open up for the queries. If you have any queries regarding my question is regarding the range. You have taken the range A1 to E6 to find 25 as the employee ID, right? So couldn't it have been taken A1 to A6 only? क्योंकि employee ID तो उसी कॉलम में है. Alert. 2 participants raised hand. Alert. To many. हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. A1 से A6 क्या है? एम्प्लॉय आईडी सारे उसी में है. एम्प्लॉय आईडी का नाम कौन सी सेल में है? बी में है. बी में है. तो एक्सेल को अगर आप नहीं बताओगे आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्सेल को पता कैसे चलेगा B2 है. ने A1 से लेके E6 तक सेलेक्ट किया. तो अगर अप्रेजल वाले कॉलम में अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी वैल्यू अगर 25 हुई तो अप्रेजल ना होके कुछ और हुआ, सैलरी वगैरह अगर तो हाँ. तो राहुल स्क्रीन शेयर रोको. Memo data to move to meeting controls. Pause. Annotate button. Pause share. Let me just off the alerts also. Yes. तो डेटा जो आपका है ना, आपकी जो क्वेरी थी कि A1 से हमने A5 क्यों नहीं बताया है ना, राइट. आपको यही समझना है. तो मैं आपको ये समझाया जो डेटा रेंज है A1 से लेके E6 तक. तो VLOOKUP फंक्शन को ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि मेरा डेटा A1 से लेके 5 तक E6 तक है, जिसमें A B C D E 5 कॉलम्स हैं, जिसमें A नंबर 1 है, B नंबर 2 है, C नंबर 3 है, D नंबर 4 है, E नंबर 5 है.
तो ये बताने के लिए हमें पूरी रेंज देनी पड़ेगी एक्सेल को। अगर आप ए फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स VLOOKUP A1 और A5 का अगर, तो उसमें वो मैच नहीं कर पाता। 25 तो उसे मिल जाता, 25 मिल जाता, उसके आगे क्या उसे बताना है, एम्प्लॉय का नाम नहीं वहां पे मेंशन कर पाता। ना आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो स्कोर है एम्प्लॉय का, उसमें मान लो अगर 25 है, उसमें अगर 25 है, उससे वो फाइंड ही नहीं हो रहा, बिकॉज वो ए कॉलम से ही फाइंड हो रहा है। अगर 25 एम्प्लॉय आईडी का स्कोर 25 है तो आपको आंसर 25 मिलेगा। तो फाइंड जो हो रहा है वो ए कॉलम से ही हो रहा है, किसी और कॉलम से फाइंड नहीं हो रहा। तो वो एक्सेल को हमने कैसे इंस्ट्रक्ट करा कि जो सर्च है वो ए कॉलम में ही रहे? हाँ मैं देता हूँ। जब आपने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद आपने A9 मेंशन, A1 मतलब मेंशन किया या A2 किया कि A2 में 25 है, तो वो A2 से ही मैच करेगा। वो अगर उसका स्कोर आप मान लीजिए D में होता, D2 में भी 25 है, बट वो मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने A2 पहले ही उसे दिखा दिया है कि A2 से ही मैच करना है, मतलब A2 के सामने जो नाम है वो ही देना है। हमने D2 वहां नहीं दिया। ब्रैकेट 25 कॉमा A1 कोलन B6 राइट। तो अब उसको ये कैसे पता चलेगा कि A1 से A6 में ही मैचिंग चलनी है और किसी कॉलम को अभी मुझे टच नहीं करना? मैं समझा देता हूँ। ये बड़ा बेसिक सा रूल है VLOOKUP का कि जो पहला कॉलम आप बताते हो ना एक्सेल पूरा को, स्कैन होगा वो पहले आप पूरा। सुनो, जो आप पहला कॉलम बताते हो एक्सेल को, उसी कॉलम में उसी रोज में फाइंड करता है, मतलब वो ए वाले उसमें ही चलता रहेगा। जो उसका रोज चलेगा वो A1 से A6 तक ही फाइंड करेगा। A1 से A6 रोज जो हैं, उन रो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो डेटा आपको देगा, ठीक है। तो VLOOKUP जो है वो रोज में फाइंड, मतलब रो बाय रो फाइंड करता है और कॉलम की वैल्यू फाइंड करके देता है। इसका सॉल्यूशन ये भी है कि आप अगर आप वैल्यू नहीं लिखना चाहते, 25 नहीं लिखना चाहते, तो आप A2 लिख दीजिए, जो हमने सेकंड एग्जांपल में आपको दिखाया। सेकंड एग्जांपल तो वहाँ हमने A2 लिखा, A9 लिखा, सॉरी A9, हाँ। तो आप ऊपर भी A2 लिख सकते थे। राइट, करेक्ट, ठीक है, हो गया मुझे क्लियर, थैंक यू। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेरी। Yes. Hello, sir. Hello. Yes. Sir, why we should use dollar sign? For absolute referencing. For absolute referencing कि अगर आप अपने अलग-अलग रोज में फॉर्मूला पेस्ट कर रहे हो, तो if you are pasting formula in different rows, the source of the data should not get changed. That's why we are pasting, we are putting dollar sign. That source should be static. It should not change automatically. Okay. Yeah. Next, please. Sir, can you repeat that formula for the dollar one once again? Dollar is simple equals VLOOKUP. VLOOKUP लिख के then what to find. So 25 we need to find. From where to find? So A1 to E6 we need to find. A1 कोलन E6 में हम डॉलर लगा देंगे. डॉलर A $1 कोलन डॉलर E $6 हम ऐसे कर देंगे. ओके, डॉलर A $1 डॉलर E $6. You need not to memorize this. ठीक है, ये डॉलर कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है. मैं आपको उसका भी शॉर्टकट बताऊंगा when we'll be demonstrating कि different sheets में कैसे लगाते हैं. तो I will give you the demonstration. But to answer your question, डॉलर लगेगा डॉलर A $1 से लेके डॉलर $6. It means जो आपको कॉमन बनाना है उसके आगे आपको डॉलर लगाना है. ये लॉजिकल एक्सेल में चलता है. इसमें कॉलन नहीं लगाएंगे, डॉट लगाएंगे. नहीं, कॉलन तो लगेगा. अच्छा सर, डॉट बता रहे थे ना, तो नहीं, कॉलन वो बाय मिस्टेक डॉट बोल दिया, बट वो कॉलन है. और सर बाकी का जो फॉर्मूला रहेगा एज इट इज सेम रहेगा? वो सेम रहेगा. बाकी ट्रू एंड फॉल्स और रो वो तो 0 और 1 तो सेम है ना. अच्छा, और जो कॉलम का सर ने बताया था 1 और 2 कौन सा? 7:00 PM. जैसे सर जैसे हमने पहले बताया था 25 A1 कोलन B6 2 0. हाँ, तो क्योंकि 2 आपको नाम ही ढूंढना है ना. अगर आपको डिपार्टमेंट ढूंढना होता तो आप वहाँ 3 कर देते 2 की जगह. तो 4 ढूंढना होता तो 4 कर देते. फॉर्मूला में आएगा डॉलर वाले? मैं वही कह रहा हूँ, जिस फॉर्मूला में अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको डॉलर लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो सोर्स रेंज चेंज कर देगा.
नहीं वो सर वहाँ पे तो मैंने डॉलर लगा दिया, बट ये ट्रू फॉल्स वाला इसमें आएगा इस वाले फॉर्मूले में? ये हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वो VLOOKUP के फॉर्मूला का पार्ट है, उसके बिना फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। अच्छा, और सर ये जो कॉलम वाला सर ने बताया अम्मा, थोड़ी कम कर दीजिए। हाँ तुम छोड़ देना ना, वो भी आएगा सर? वो भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और अभी आप सी विल बी अगेन डेमोन्स्ट्रेटिंग, जब हम डिफरेंट शीट में लगाएंगे ना तो हम वैसे एक बार दिखाएंगे VLOOKUP लगा के, तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी। श्योर सर। चलो नेक्स्ट। सर ये जो लास्ट में फॉर्मूला लगाया था, यस 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 बोलिए। हाँ सर, जो बाद में आपने नीचे फॉर्मूला लगाया था A9 में, हाँ सर उसमें और जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया था, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? पहले जब हमने फॉर्मूला लगाया था तो हमें पता था कि 25 ढूंढना है हमने। यस सर। बट हमने जब दोबारा फॉर्मूला लगाया, हम एक्सेल को ये बता रहे हैं कि 25 कहाँ लिखा है, ये बता रहे हैं कि यहाँ से 25 उठाना है और यहाँ जाके ढूंढना है। समझा पाया मैं आपको? 25 कहाँ? हाँ, हमने सेल को रेफरेंस बता दिया, एड्रेस बता दिया कि यहाँ से जाके 25 ढूंढ लो। ओके। Yeah, is it possible to search multiple things? जैसे आपने 25 लिखा, 25:35 ऐसा करेंगे तो possible है या फिर कॉमा करके करना है? I'm sorry, I missed your query. I asked, is it possible to search multiple things at one time? For example, if you want to search 25 and 35 together, is it possible to separate them by a colon and search, or one by one he can? But logically, do you want to put the result in same cell? Not the same cell, maybe same row. I mean, so I might want to find out the employee ID and then उसके नीचे का some other IDs as well together. So for a large data, instead of going for one by one, for example, अगर मेरे पास कुछ कैंडिडेट के नाम है और अगर मैं 6 कैंडिडेट की डिटेल्स देखना चाहती हूँ, तो is it possible to do that? डिफरेंट सेल्स में कर सकते हो, एक सेल में हाँ, नहीं। different cells. हाँ, you can do it. Okay. So that will be separated by colon, right? नहीं, separated by colon as in you want to bring. नहीं, I think we आपकी query राहुल, मैं बताता हूँ. Suppose there are 60 employee IDs, and she wants to find data for like employee ID 25, 35, 36 and 54 in one go. तो क्या वो possible है? Right, you got it right. I am sorry, I'm not tried this. मतलब वैसे जहाँ तक है मुझे नहीं लगता है, मेरे को लगता नहीं कि ये होगा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना VLOOKUP का जो क्लियर है, 4 कंपोनेंट्स होंगे और कॉमा से सेलेक्ट होंगे। आप ये तो शायद कर सकते होंगे कि मतलब जैसे एम्प्लॉय ID 25 है, उसका नाम क्या है, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका कौन सा क्या स्कोर है, ये तो आई गेस आप कर सकते हैं, बट उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, बस उसमें सेल रेफरेंसिंग चेंज करनी पड़ेगी ना। हाँ, 1 2 In that we are already getting it right. अगर मैं 25 लिखूंगी तो योगेश की पूरी डिटेल्स मुझे दिख जाएगी, करेक्ट? हाँ, यस। हाँ, ये पॉसिबल है। हाँ, ओके, गॉट इट। बट अब योगेश, राहुल और उमंग ऐसे तीनों का एक साथ नहीं देख सकते हैं। Got it. Okay, thank you. Next and last question for VLOOKUP. क्या हम बाय नेम टैग से भी सर्च कर सकते हैं? क्या जैसे हम मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि योगेश का एम्प्लॉय नंबर और हाँ, मैं समझ गया। यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो, नंबर, अकाउंट नंबर, डेट, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो सर ये कैसे करेंगे अगर नेम लिखना हो तो? हमने जैसे A9 में हमने 25 लिखा है, तो वहां पे हम योगेश लिख देंगे 25 की जगह। लेकिन उसके लिए ना हमें पूरा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। हमको उसके लिए एक्सेल को बताना पड़ेगा कि जो नेम है वो सबसे पहले है। मतलब अभी A कॉलम में एम्प्लॉय आईडी था, अगर आपको याद हो A1 से E6 में A कॉलम में क्या था, एम्प्लॉय आईडी। हमें A कॉलम में नेम रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो जो हमको सर्च करना है वो सबसे पहले होना चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट कॉलम। ओके, दैट शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट कॉलम, देन ओनली वी कैन फाइंड इट। ओके, ठीक है, तो ये VLOOKUP का फर्स्ट रूल है और वेरी थंब रूल है कि जो फाइंड करना है वो नंबर 1 पोजीशन पे होना चाहिए।
तो सपोज सर कि अगर एम्प्लॉय आईडी हमारा रो बी में होता, कॉलम बी में सॉरी, तो फिर हम बाय नेम सर्च कर सकते थे, एम्प्लॉय उससे नहीं सर्च कर सकते। तब कर सकते थे। वी लुकअप लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं कर सकता। ओके सर, ठीक है, ये वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये वी लुकअप लिमिटेशंस में आता है कि यहाँ तक कि ये वी लुकअप काम कर सकता है। ओके सर। और इसलिए वो मतलब ये सेम आंसर उस पे भी अप्लाई होता है। अभी पहले किसी ने पूछा था कि अगर डी में भी 25 है तो वो उसको नहीं करेगा क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट ही चलता है और फर्स्ट कॉलम में ही देखेगा वो। ओके राहुल, नेक्स्ट शीट वाला। यस, सो वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट शीट। हेलो सर, you have to hold your query, we'll take it afterwards। और हो सकता है query आंसर ही हो जाए। Rahul, are you there? Am I audible now? Yes. ठीक। Okay, so I'm just starting the screen share। PC. Alert. Sharing is resumed. Zoom cloud meetings to move to an demo data. Zoom demo data. Microsoft Excel. Okay, so now we will be Alert. Sujatha has joined the meeting. We'll be now Alert. Halumi Lavaralakshmi has left the waiting room. Okay, we'll be now understanding how to use Alert. Halumi Lavaralakshmi in different sheets। Okay, so now say मेरे सामने एक sheet open है। Blank. See, speech on demand. Full speech. Demo data to move to an item. Press the arrow keys. Blank. Blank. See for VLOOKUP example. Employee. Okay, so I have got two sheets। One sheet is VLOOKUP data. Blank. VLOOKUP data, जिसमें मेरा डेटा है A1 से लेके E6 तक। Employee ID A1. 55 A5. 65 A6. B E6. ठीक है, E6 तक मेरे पास डेटा है। और मेरे पास दूसरी शीट है VLOOKUP example. VLOOKUP example। इस शीट में मेरे पास डेटा है 20 employee ID A1. A1 से लेके 65 A6. A6 तक। और क्या है मेरे पास? Employee ID A1. A1 में एम्प्लॉय आईडी है, Blank B1. B1 ब्लैंक है, सब ब्लैंक है। अब मुझे चाहिए इस जो A1 से लेके A6 तक एम्प्लॉय आईडीज हैं उनका नाम और उनका ग्रेड। ठीक है, आई वांट नेम एंड ग्रेड। सो Blank B1. B1 में मैं हेडिंग बना लेता हूँ नेम। N care words. Both none characters. Slower. Blank N A E. नेम। Blank C1. C1 में हेडिंग दे देता हूँ ग्रेड। G A D E. Grade C1. Name B1. ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया। और अब मेरा जो डेटा है Employee ID 25 A2. A2 में 25 है, तो B2 में मुझे नाम लाना है। तो मैं B2 में I'll place my cursor in B2 Blank B2. and I'll start writing the formula over here। So my formula is equals VLOOKUP P. bracket open Left parent. A2 1 A2 comma. from where to get the data। तो where मतलब अब मेरे को शीट का नाम तो याद नहीं है भाई, बहुत the sheet name could be a bigger one and the sheet name could be bigger one। और sheet का नाम लिखने में we have to use exclamation sign also। So instead of writing the sheet name, I will navigate to the sheet by pressing जो sheet navigation command है वो है control page up और page down। हम उससे sheets में move करते हैं। तो फॉर्मूला मोड में भी हम शीट्स में मूव कर सकते हैं। तो इक्वल्स A2 कॉमा, अब कमांड यूज की जाएगी कंट्रोल पेज अप। विल यूज द कमांड कंट्रोल पेज अप टू मूव टू द प्रीवियस शीट वेयर आवर डेटा इज। Press arrows to select cells or type an operator, then arrows to select cells. So जैसे ही मैंने कंट्रोल पेज अप किया, सो एक्सेल ने अनाउंस किया प्रेस एरोज टू सेलेक्ट सेल। ओके, सो ये एक्सेल का
एक जॉस के साथ एक्सेल का ये इशू भी है कि पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिलती है डायरेक्टली, वी हैव टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज द की स्ट्रोक टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन? हम इंसर्ट अप एरो वाला कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट की के साथ यूज करेंगे. यहाँ पे हमको एरो कीज नहीं प्रेस करनी. अगर हम एरो कीज प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा होगा. Equals lookup left parent A2 comma. वी कैन प्रेस द एरो कीज. ओके, हम एरो कीज प्रेस करेंगे बिकॉज हम सिलेक्शन एरो कीज से ही करेंगे. तो इक्वल्स विल, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ. Escape. 25 A2 blank मैं B2 B2 में हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स VLOOKUP A2 A2 comma. कॉमा. अब उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज अप, क्योंकि मुझे पता है मेरा डेटा पुरानी प्रीवियस शीट में है. Press arrows to और select ये cell. मैसेज हमने सुना. उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल होम. Equals lookup left. जैसे ही हम कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कर्सर कहाँ पर है. एक्चुअल सेल रेफरेंस हमें पता चल जाएगा. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1. apostrophe VLOOKUP data apostrophe exclamation sign. ये शीट लिखने का तरीका है जो एक्सेल ने अपने आप लिख लिया. तो जैसे ही हमने कंट्रोल होम किया हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई इक्वल्स VLOOKUP A2 कॉमा शीट का नाम और जहां हमारा कर्सर है उस शीट में उसका रेफरेंस. अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें हमको यहाँ पर जो रेंज सिलेक्ट करनी है. तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके वो रेंज सिलेक्ट कर लूंगा. कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1 colon E1. A1 से E1 तक सिलेक्ट हो गया. अब Alert. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1 colon तो E6. वही रेंज आ गई जो रेंज हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे. बट इस बार वो जो रेंज आई है वो शीट के नाम के साथ आई है. ओके, सो मैं इंसर्ट अप एरो से एक बार फॉर्मूला रीड कर लेता हूँ. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1 colon E6. ठीक है, रेंज मेरी बिल्कुल करेक्ट हो गई, शीट के नाम के साथ आ गई. एंड विल प्रेस कॉमा ओवर हियर. Comma. And what we want to find is name. So name is in B column. So I will write 2, comma, exact match 0, 0. bracket close. Right parent. Enter. Blank B3. Anish has formula तो B2. अनीश आ गया. लेकिन अब मैं जैसे ही इस डेटा को नीचे मूव करूंगा, इस फॉर्मूला को नीचे मूव करूंगा, डिफरेंट रोज में मूव करूंगा, तो रोज का जो एड्रेस है फॉर्मूला में वो चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज नहीं करी, हमने डॉलर का साइन नहीं यूज किया. तो हमें हम डॉलर का साइन यूज करना है, तो हमें फॉर्मूला फिर से इंसर्ट कर लेते हैं हम डॉलर के साइन के साथ. अब मैं फॉर्मूला फिर से क्यों इंसर्ट कर रहा हूँ? मैं तो डॉलर F2 करके भी लगा सकता हूँ, बट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट यू अ शॉर्टकट टू इंसर्ट absolute reference or to insert dollars. Okay, so I'll quickly type the formula again in B2. Anish has form left A2 comma equals A2 equals VLOOKUP A2 comma और फिर कंट्रोल पेज अप करके अपनी उस शीट में गया. press arrows to select cells or type. कंट्रोल होम प्रेस किया. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim अपनी सेल की रेंज सेलेक्ट कर ली. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1 colon E6. पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया मेरे सामने. नाउ आई कैन प्रेस F4 की. ओके, फंक्शन की F4. जैसे ही मैं फंक्शन की F4 प्रेस करूंगा, F4. अब F4 प्रेस कर दिया मैंने. अब मैं इंसर्ट अप एरो से फॉर्मूला रीड कर लेता हूं अपना. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim $A $1 colon $E $6. तो जहां पे डॉलर लगाना था एक्सेल ने अपने आप डॉलर लगा दिया. ओके, सो जैसे ही आप सेल रेफरेंस डाल देते हैं उसके बाद F4 प्रेस करके अब हम कॉमा करेंगे, comma प्रेस करेंगे, 2 कॉमा 0 right और ब्रैकेट parent बंद. enter blank B3. Anish has formula B2. में अनीश का नाम आ गया, लेकिन हमें C2 में ग्रेड भी चाहिए. सो वी विल कॉपी दिस फॉर्मूला. F2 edit escape. मैं फॉर्मूला को Anish has formula कॉपी B2. नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ. देखो क्या रिजल्ट आता Copy है. blank pasted Anish number n/A has तो formula. जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, C2 में आके पेस्ट कर दिया फॉर्मूला, एरर दिया नंबर NA.
Now what is the meaning of number NA? That means that Excel could not find what we have asked Excel to find. Okay, there was some either error in the formula or employee ID 25 is not available in the database. So ऐसा तो है नहीं कि 25 available नहीं है. It is very much available. That's why we have got the employee name. But certainly there is some error in the formula. So let's see what is the error. End. Alert. Number N slash I A. have come to C2. I'll press F2 over here. F2. Edit. And I will start reading the formula. Top equal. U. P. Left parent. B. 2. So equals Vlookup. A2 की जगह वो B2 हो गया. Now why B2 it has happened? Because we are not using absolute referencing in Hello. नेट गया शायद राहुल. Hello, am I audible now? Yes, yes. Yeah. Okay. So we are not using absolute referencing in what to find, but we are using absolute referencing in where to find. तो हम क्या करेंगे, इसको B2 को हम मैनुअली चेंज करके A2 कर देंगे. B2. B. B की जगह मैं यहाँ A लिख देता हूँ. A. Enter. Blank C3. Anish has formula C2. F2. Edit. और इस फॉर्मूला के लास्ट में हमें चाहिए था ग्रेड. तो नेम वाज इन B कॉलम बट grade is in E column. So for E column we A column is number 1. तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो E column will be number 5. So we will change 2 to 5. Blank. Blank. Escape. Blank. D2. Anish. F2. Edit. Blank. 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 5. Enter. A has formula C. So we have changed 2 को हमने फॉर्मूला को F2 करके चेंज कर दिया और वहां पे हमने 5 कर दिया. ओके, 2 की जगह. एंड नाउ वी कैन सी द ग्रेड. नाउ वी कैन कॉपी दिस both the formulas in next row. 25. So I am selecting the formula in B2 and C2. Select Anish. Copied. 35. A3. Blank. Anish. Select A. C2. Cop. Blank. B3. B3 में पेस्ट कर दिया दोनों फॉर्मूलाज को. Pasted. Blank. Dipesh has form 35. तो A3 में था 35. तो 35 जो एम्प्लॉय आईडी थी वो दीपेश की थी. Dipesh has formula और B3. B3 में दीपेश आ गया. A has formula. दीपेश का स्कोर आ गया A. Now let's copy paste this formula till end. Dipesh. Select copy. Blank. B4. Control. Unselect except D4. 20. 60. Blank. B6. A. Dipesh has formula B3. Copy. Blank. Pasted. Pasted. Anish. Pasted. Blank. B7. Nilish has formula तो B6. हमने लास्ट तक पेस्ट कर दिया और अब हम देख लेते हैं क्या डेटा हमारे पास है. 25. Anish. 25 is Anish. 30. Dipesh. 35 is Dipesh. 45. Yogesh has formula 45 B4. योगेश. 55. A5. A5 में 55 लिखा था Sandeep has और formula 55 का नाम आ गया संदीप. B has और इन formula सबके जो अप्रेजल ग्रेड था वो भी B हमारे has सामने आ गया है. Nilish. 65. Nilish has 65 is नीलेश. So हमारे पास इनका भी डेटा आ गया, नीलेश का भी डेटा आ गया. So this is how we are doing VLOOKUP in different sheets. Okay, different sheets, same workbook, different sheets. Now say for example हमें different workbook में करना होता. Same thing we had to do in a different workbook. So उसके लिए हम क्या करते हैं, different workbook में जाके equals VLOOKUP लिखते हैं, बताते क्या फाइंड करना है, A2, A3, A4 जो भी फाइंड करना है वो करते, ऑल टैप करते या कंट्रोल F6 करते, कुछ भी यूज करके हम उस शीट में आते और इसी तरीके से उसी तरीके से हम सिलेक्ट करते और फॉर्मूला वैसे ही लिखते हैं. तो जो नेविगेशन कमांड्स हैं फॉर नेविगेटिंग इन डिफरेंट वर्कबुक्स, नेविगेटिंग इन डिफरेंट शीट्स, those commands will be used in formula mode also, but at times you may not get the desired information immediately once you press the command. तो उसमें आप insert up arrow use करके आप information retrieve कर सकते हो कि फॉर्मूले में क्या इनपुट हुआ है. So this is working with sheets in VLOOKUP. Now we are opening up for the questions. Alert. 3 participants raised hand. Hi Rahul. Alert. 3 participants raised hand. Yes, Umang, continue. मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमने इसमें ग्रेड के लिए अलग हमने फॉर्मूला लगाया और हमने नेम के लिए अलग लगाया. हाँ. तो ऐसा फॉर्मूला लगा सकते थे कि हमारे पास ग्रेड और नेम दोनों एक साथ ही आ जाए.
बिल्कुल लगा सकते थे, बट वो वो थोड़ा confusing टिपिकल होगा। हो जाएगा, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हाँ, मतलब 1 to 1 we can tell you, but it will be difficult. So see, it is important to understand the basics first. तो बेसिक में ऐसे हो जाएगा, और यस जो आपने पूछा वो पॉसिबल है, बट कैसे है वो हम आपको बाद में बता देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आई हैव ए क्वेरी कि जैसे कि हमने एक जो पहले वाला किया था उसमें जैसे A35 में 55 लिखना जरूरी है, मतलब B35 में जब उसका नेम चाहिए था तो वो तो हमने फॉर्मूला पेस्ट किया था, तो A35 में 55 क्यों मेंशन किया था? हाँ, तो क्या फाइंड करना है, हमने एक्सेल को क्या बोला, इक्वल्स VLOOKUP A35। अब A35 तो एड्रेस है किसका, सेल का, हाँ हाँ है ना, बट A35 में कुछ वैल्यू भी तो होनी चाहिए तभी तो फाइंड करेगा। सो A35 में कुछ वैल्यू होगी तभी वो फाइंड करेगा, अगर वहां पे कुछ वैल्यू नहीं होगी तो NA लिख के आ जाएगा फॉर्मूला में, इसलिए हमने टेस्ट बेसिस पे उसमें कुछ वैल्यू डाली थी। और सर ये जो आपने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करे थे उसी शीट में पूरे नीचे तक, वो हम कंट्रोल D भी तो यूज कर सकते हैं ना, ड्रैग करके भी तो लेके जा सकते हैं ना उसको, जैसे हमने सना एक्सेल में एक काम को करने के 10 तरीके हैं, सो either of the ways could have been used, तो हमने कॉपी पेस्ट यूज किया, yes control D also works, you are absolutely right. ओके, एंड सर F2 की जो है विद JAWS आई एम यूजिंग JAWS 20, तो व्हेन आई प्रेस F2 की एंड MS 10 यूज कर रही हूँ तो वो इट डजंट रीड लेफ्ट राइट एरो से, ब्लैंक ब्लैंक पड़ता है, मतलब एडिट बॉक्स में जो लिखा होता है फॉर्मूले में वो रीड नहीं करता, तो उसका कोई वो ना और कमांड। Alert, Sujatha has left the meeting. Alert, Sujatha. राहुल स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। हाँ हाँ, यस। Task switching, demo data to meeting controls. Zoom cloud meeting can pop, more button, dock the bottom button, stop share button, alert you. ओके, सो वो ना जॉस की प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट एक्सेल का प्रॉब्लम। जॉस में ना प्रोबेबली जॉस का इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ होगा, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब ऑफिस 2010 ऑनवर्ड्स ये इश्यूज हम लोगों ने भी फेस किए हैं। तो जॉस को रीइंस्टॉल करना, वीडियो इंटरसेप्ट ड्राइवर्स चेक करना, ये सब चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक इट सम टाइम लेटर, ठीक है, विल रिजॉल्व दिस इशू। ओके, क्योंकि JAWS 19 में भी आई एम फेसिंग दिस एंड 20 में, दोनों आई हैव इंस्टॉल्ड बोथ। We will try to work out. We'll try to work out. After session, maybe sometime later, you can get in touch. Yeah, next question please. राहुल, वन मोर क्वेश्चन, जो हमने F4 किया था वो हमने किस लिए किया था, ताकि हम वो डॉलर खुद आ जाए वहाँ पे, कहाँ पे करेंगे F4? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए किया था हमने वो, और डॉलर साइन, जैसा कि आपने बोला कि डॉलर साइंस आ जाए, यस उसी के लिए किया था। वो हमको करना है, ये इक्वल्स VLOOKUP क्या फाइंड करना है, A2 में A2 लिख दिया, कॉमा कहाँ से फाइंड करना है, जब हम कहाँ से फाइंड करना है ये बता देंगे एक्सेल को, और फिर कॉमा टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करने से पहले हमें F4 करना है, ठीक है, इक्वल्स VLOOKUP A2 कॉमा A1 कोलन E6, फिर F4 करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू फॉर्मूला। या सर जैसे हमने A35 टाइप किया, तो ये वो टाइप करना है हम जिस सेल में एट प्रेजेंट हैं? नहीं। हाँ, यस आप आंसर कर लो। हाँ, A35 आपने वो टाइप किया कि जिस सेल की वैल्यू से आपको मैच करना है। मान लीजिए A2 में मेरे पास 25 था, तो अगर मैं वहाँ A2 लिखता तो वो A2 से वैल्यू मैच करता, मतलब 25 A2 में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सर्च कर रहे हैं हम, तो A35 का मतलब कि A35 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सर्च कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। फॉर्मूला हम कहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला आप चाहे वैल्यू का सेल, आप जैसे A से E कॉलम तक हमारा डेटा था, हम F2 में भी जाके फॉर्मूला लिख सकते थे। ओके, उससे। और सेकंड क्वेश्चन सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। और अगर सर हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो फिर हमें डॉलर लगाने की जरूरत है? 100% है, डॉलर तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए जरूरत है, नहीं तो आप जैसी फॉर्मूला ड्रैग करेंगे आपके फॉर्मूलाज में सेल के रेफरेंसेस भी ड्रैग हो जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट और ड्रैग में मतलब डिफरेंस नहीं है वो, बट वो तो इसलिए रेफरेंस तो चेंज हो ही जाएगा, तो उसमें भी एब्सोल्यूट बनाना ही पड़ेगा आपको। ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, मेरी क्वेरी भी फॉर्मूला के रिगार्डिंग ही है। हाँ, तो जैसे सेकंड शीट में हमने इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट A2 डाला था सेल रेंज। हाँ,
देन कॉमा, उसके बाद हमें शीट का नाम नहीं पता था तो हमने कंट्रोल पेज अप किया। हाँ तो सर हमारा फोकस तो शीट 1 पे चला गया जिस पे भी हमें जाना था। हाँ देन यू प्रेस कंट्रोल होम, हाँ। तो हमारा फोकस फिर से इक्वल पे आ गया था फर्स्ट नहीं में। नहीं नहीं, नहीं, वो बोला इक्वल था बट हमारा कर्सर जो है उस जो जी। शीट हम जिस प्रीवियस शीट में गए हैं हम्म, उसके फर्स्ट रेंज के फर्स्ट सेल पे आ गया था। ओके सर, मैंने वो फर्स्ट शीट के A1 पे आ गया था। हाँ हाँ देन उसके बाद आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। हाँ। सर उसके बाद क्या किया था सर? उसके बाद हमने फिर F4 प्रेस किया जी। क्योंकि उससे हमारी सेल रेंज आ गई ना। तो सेल रेंज जब सेलेक्ट हो गई A1 से E6 तक, ठीक है तो उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए F4 प्रेस कर दिया ठीक है और फिर कॉमा प्रेस किया। जी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें जी। अगर नाम देखना था तो 2 लिखा, मतलब सेकंड नोट में देखना है, या अगर ग्रेड लिखना था तो 5 लिखा जैसे। जी और जी फिर सर, तो कॉमा देके हाँ कॉमा देके 0 लिख दिया था। तो हाँ जैसे हमारा ग्रेड था 5 नंबर पे, हाँ E1 पे, ई भाई हाँ। तो अगर हम नाम के साथ 2,5 देन कॉमा 0 लगाते तो वो दोनों चीजें हमें मिल सकती थी सर। ये थोड़ा सा फिर वही आगे टिपिकल पार्ट में जाएंगे। अभी राहुल इस पे अगर आप कुछ बोले तो मैं तो नहीं, ये मल्टीपल आप जो बात कर रहे हो ना, मल्टीपल वी लुकअप की बात कर रहे हो, ये पॉसिबल है बट अभी हम उसमें जा नहीं रहे, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके तो सर, आप पूछना चाह रहे हो ना वो ठीक है, बट उसका मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया, ठीक है। और हाँ, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, एक सेल में वो 2 वैल्यूज नहीं आ सकती। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आप 2,5 लिख दो और वो एक ही सेल में आ जाए, वो नहीं हो सकता, आएगा अलग अलग सेल में ही। वो आएगा अलग अलग सेल में। हाँ, लेकिन जो आप फॉर्मूला बता रहे हो वो एडवांस फॉर्मूला है और वो अलग अलग सेल में वैल्यूज देगा, बट वो पॉसिबल है, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग वील एडवाइज यू कि आप मैनुअली चेंज कर लो। ठीक है सर। फिर जैसे C1 C2 में हमने ग्रेड डाला था सर, हाँ तो उसमें भी सेम प्रोसेस हमने किया था। ऊपर पेज अप हाँ करके सिलेक्ट कर लिया था टोटल। हाँ, नहीं, उसमें हमने सेम नहीं किया। हमने उसमें क्या किया, B2 से फॉर्मूला उठाया, F2 प्रेस करके B2 से फॉर्मूला उठा लिया हमने, F2 प्रेस करके उस फॉर्मूला कॉपी कर लिया, ठीक है। पूरा फॉर्मूला कंट्रोल A से कॉपी कर लिया और C2 में जाके पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। ठीक है सर। ठीक है, वो किया था हमने। हम चाहते तो फॉर्मूला पूरा भी टाइप कर सकते थे, लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला पूरा रेडी था, बट हमको सिर्फ 2 की जगह 5 लिखना था। तो हमने क्या किया, F2 प्रेस किया, कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, C2 में गए और वहां डायरेक्ट कंट्रोल V कर दिया बस। ओके सर। ठीक है। और अगर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप F2 करके कॉपी नहीं करेंगे, डायरेक्ट B2 में कंट्रोल C प्रेस करके C2 में कंट्रोल V करेंगे, तो नंबर NA रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो डेटा फाइंड करना था वो A2 वाला फाइंड करना था। लेकिन आपने फॉर्मूला ड्रैग किया, कॉपी वेस्ट किया, तो वो A2 की जगह अपने आप B2 हो गया। ओके, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट F2 प्रेस करके फॉर्मूला सिलेक्ट करो, कॉपी करो और नेक्स्ट शीट में जाके, नेक्स्ट सेल में जाके पेस्ट करो। ये है अगर आप कॉलम चेंज कर रहे हो। मान लो अगर ये है, हाँ, अगर आप कॉलम चेंज कर रहे हो, अगर आप रो में ट्रैक कर रहे होते फॉर्मूला, यानी कि B2 से B3 में लेके आ रहे होते, तो आप कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते, काम कर जाता, कोई इशू नहीं आता उसमें। बट कॉलम अगर चेंज होगा, देन यू हैव टू यूज F2 टू कॉपी द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट Sir, I have a question. Yes. Like you told all the commands and all. So when we are using the formula, supposedly we have a data till A6 and we are using the formula at A8, right? So and after completing the formula, we check it. JAWS speaks that has formula. So where can we save that data? Can we press Control S and close, after saving, close that sheet? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी क्वेरी, फिर से बताओ। मतलब कि जैसे हमने A8 में जो फॉर्मूला इंसर्ट किया था उसका रिजल्ट आ गया, हाँ, तो उसके बाद अगर हम फाइल को सेव कर देते हैं, हाँ, तो क्या वो वहीं पर रिमेन रहेगा? यस, डेटा विल रिमेन ओवर देयर, डेटा विल रिमेन ओवर देयर। सो ओके, मैं समझ गया आपका सवाल। सो डेटा, यस, आप जब फाइल सेव कर देंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो डेटा रिमेन वहीं पे रहेगा। बट अगर आपने जहां से डेटा उठाया है A1 से लेके E6, अगर वो डेटा आपने डिलीट कर दिया,
तो जो आपका VLOOKUP का रिजल्ट है वो NA हो जाएगा। तो बेस डेटा नहीं चेंज करना हमें, बेस डेटा एज इट इज अगर रहेगा तो जो डेटा आपने जहाँ छोड़ा था आपको डेटा वही मिलेगा। लास्ट टू ठीक है। और क्वेरीज फॉर VLOOKUP। सर एडवाइजेबल कहाँ सेव करना होता है जो हमारा रिजल्ट आता है उसको? मतलब जिस शीट में आप काम कर रहे हैं वहीं सेव कर सकते हैं। किसी भी सेल में चाहूँ मैं? हाँ हाँ, किसी भी सेल में सेव कर सकते हैं। वो आपको ढूंढना है ठीक है क्योंकि सर, वो ठीक। आपको पता होना चाहिए कहाँ सेव करना है, मतलब किस सेल में आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, गेटिंग इट लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर VLOOKUP। Hello, sir. Yes. Actually, suppose I would like to tell one scenario. My boss shared one Excel sheet with A1 to assume A1 to A200. Okay. But he didn't mention any IDs. Okay. Employee ID. Okay. I want to search one particular person name. Because A1 to 200, there will be having with the same person, there will be multiple persons, right, with same name. Yes. Did you got it, sir? What Yeah, I got it. If in this scenario, how I will get the particular person which I am looking? Because with the same name, multiple people will be there. Same name, multiple people will be there. Good. So in that case, you need to have a unique key. Okay. So unique key. Okay. Unique key could be employee ID. Okay. Unique key could be account number. Unique key could be customer ID. Now I got your query also, and I am answering that also. So say you are finding it by name, right? And yes, name is Rahul, and there are 10 Rahul in your company. Okay. So which result you will see? So you will see the first result. Maybe say one Rahul who is posted in Chennai, his employee ID is 123, and second Rahul is posted in Delhi and his employee ID is 456. So first Rahul is mentioned in say your data is from A1 to A200, yeah, L200. So on A25 Rahul Chennai is there, and on A50 in 50th row Rahul Delhi is there. So VLOOKUP will get the first data at A25. So information about Rahul Chennai will be provided to you in VLOOKUP. Okay. So wherever there are multiple names, we advise that you create a unique key. There should be a unique identifier for matching the data in VLOOKUP. Okay. In that scenario, if I could take department, in that department also there will be matching people will be there, right? I will tell you the solution to this. The scenario which you're telling, we have actually gone through that scenario. So in that case, you can create a primary key. What could be the primary key? Rahul name and Rahul's department may be IT. So you can create a primary key Rahul IT. Okay. You can use AND function in Excel and create a new key, a new name, Rahul IT. Okay. That you can use and then you can pick up. Instead of employee ID, you can create your own ID. So Rahul IT will be a unique thing in your database. So you can use that. Okay. Okay. So answer is you need to have a otherwise you won't be able to find the correct result. Okay. Done. Last query for VLOOKUP. Sir, I have one more query कि जैसे हमें राहुल चेन्नई नहीं, हमें राहुल दिल्ली फाइंड करना है सपोज, सो कैसे करेंगे? क्योंकि एक्सेल तो चेन्नई दे देगा लेकिन हमें राहुल दिल्ली चाहिए, तो वो कैसे हो? नहीं हो पाएगा सना, अगर डेटा इफ यू डोंट हैव द प्राइमरी की इन योर डेटा, सो इट इज नॉट पॉसिबल. नहीं, आईडी तो यूनिक है लेकिन जो है राहुल तो कैन बी 456 इन कंपनी, लेकिन हमें राहुल दिल्ली का चाहिए. आईडी तो यूनिक है बट 200 तक है तो वी डोंट रिमेम्बर कि इसका किस जो फाइंड करना है वहां पे भी यूनिक आईडी होनी चाहिए. यूनिक आईडी तो होगा, एम्प्लॉय आईडी तो डिफरेंट होंगे राहुल के. नहीं, एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है लेकिन सर हमें याद नहीं है कि वो A1 से A200 में कहाँ है. मतलब वो थाउजेंड्स का डेटा है तो उसमें तो सर्च करने में टाइम लगेगा कि कहाँ पे राहुल दिल्ली का. समझो फिर से समझो आप. से यू हैव 2 शीट्स, दोनों शीट में आपके पास नाम और डिपार्टमेंट का नाम है. ठीक है. इन बोथ शीट्स यू हैव नेम एंड डिपार्टमेंट नेम व्हिच इज कॉमन अक्रॉस बोथ. ओके. तो मान लो A1 में नाम है, B1 में डिपार्टमेंट का नाम है, दोनों शीट्स में.
C1 में we'll go to C1 and in C1 we'll use A equals A2 and equals A1 and B1. We'll use this. तो अब वहाँ पे say in first row you have Yogesh and department is we say sales. Okay. It will be now Yogesh sales. Now ये probability तो कम है कि sales में 2 Yogesh होंगे. ठीक है. राहुल IT will be a unique name. ये भी प्रोबेबिलिटी कम है कि राहुल आईटी भी दोनों मतलब कॉमन होंगे. ठीक है. आप स्टेट के हिसाब से कर सकते हो. से आपके पास स्टेट नेम और एम्प्लॉय नेम है तो यू कैन क्रिएट अ प्राइमरी की विद स्टेट नेम एंड एम्प्लॉय नेम. ठीक है. एंड फंक्शन यूज करके फिर वी लुकअप कर सकते हो. तो पॉइंट इज कि आपके पास दोनों शीट्स में देयर शुड बी अ कॉमन फील्ड जिसको हम सी एक्सेल इज वेरी गुड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आल्सो. और डीबीएमएस में एक रूल है प्राइमरी की का जो वी लुकअप में भी लागू होता है. तो देयर शुड बी वन प्राइमरी की विच शुड बी कॉमन अक्रॉस शीट्स. तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो वी हैव टू क्रिएट वन. तो फिर उसको क्रिएट करके उसके थ्रू वी विल राइट द फॉर्मूला. मतलब अब हम फॉर्मूला राइट करने के लिए वी विल यूज दैट C1 वाला कॉलम जिसमें हमने प्राइमरी. You got it absolutely right. You got it very right. C1 को you will bring to A1 and then you will use that. ओके. सो जैसे अब हम C1 को A1 मिले हैं. अब हमें राहुल हमने करा जैसे राहुल HR ढूंढना है तो अब उसमें पहले वी हैव टू नेविगेट कि किस इन विच सेल राहुल HR इज रिटन. देन ओनली नहीं आप डायरेक्ट जैसे इक्वल्स वी लुकअप. ठीक है. राहुल HR you can type that. राहुल एंड HR करके. नो राहुल HR वो एक कॉमन प्राइमरी की बन जाएगी ना. ओके. सेल रेफरेंस दे दो ना. आपने C2 में आपने इक्वल्स वाला एंड लगा के प्राइमरी की बनाई है. अब मान लो आप फॉर्मूला D में लगा रहे हो तो आप फॉर इक्वल्स वी लुकअप C2 कॉमा बट जो आपका डेटा है जैसा आपको योगेश भैया भी बता रहे थे कि जो आपका बेस डेटा जहां से आप फाइंड करोगे वहां पे प्राइमरी की एक कॉलम में रखनी है. आपको ये ध्यान रखना है आपको. हाँ ठीक है. तो बस वो फॉर्मूला लगा लो वी लुकअप का और सेल रेफरेंस C वाले कॉलम का दे दो हो जाएगा. यू विल फाइंड द रिजल्ट. ओके राइट. So yes. Okay. Last query for the day for VLOOKUP. Sir. Yes. Could you share the recording with us? We will do that, but it will take some time. Since I lost from the beginning itself, there were a connectivity issue. No problem. We'll share. We will share, but it will take some time. Okay. Thank you, sir. So this is all about VLOOKUP. Now let's see whether we have some time left for HLOOKUP. No, HLOOKUP we can't take. HLOOKUP we won't be able to take. We are running short of time. We are running very short of time. So we are extremely sorry. We planned some more functions also, but we won't be able to take it now. So so if you could reply on mail, it would be better. Definitely will reply on emails. You can send us any query. So I only sent that mail to you. Which one? HLOOKUP, no? हाँ जी. और उसमें एक दो और queries भी थी साथ में. ठीक. We will respond to that. You had that query also, na, about sending emails through mail merge. If I am not wrong. Sir? Yes, of course. So we will. We have written the steps. We will send you that also. All right. Thank you, sir. हेलो सर. यस सर जैसे अभी टाइम नहीं है हमारे पास VLOOKUP कवर अप करने के लिए, लेकिन सर उसको वर्बली हम समझ सकते हैं कि VLOOKUप है क्या? नहीं, इतनी देर से तो हम VLOOKUP ही समझ रहे थे ना. सॉरी VLOOKUP नहीं सर, HLOOKUP. नहीं, HLOOKUP हम वर्बली भी नहीं कर पाएंगे. What we'll try to do is for today it is not possible because it is very similar to VLOOKUP itself. But demonstration में काफी time जाएगा. We'll try to schedule one more session if possible. If NAB Delhi permits, we'll try to explore possibilities of conducting one more session, a short session, and we'll try to cover emails and HLOOKUP. Okay. Please try, sir. Hello. Yes. Hello. Yes. So this will be the last query for the day. Okay. Am I audible? Yes. I'm Jason from Chennai. Yeah. That HLOOKUP steps and that mail merge emails, no, please send it to all because I may also need that actually.
Okay. Hello? Yes, okay. Okay. It's clear, right? We will fix a third session like 99%. Okay. And in that we will take only lookup and this email. By email. Yeah, Okay. mail merge. And this recording, how long will it take, Yogesh, to get the recording? How long will it take? We have to check because we have to get it edited as well. Like some editing is required. So Because after that, myself also, because of connectivity issues, I lost my first. we will try to share it at the earliest, as soon as possible. Okay, you'll be sharing all the recordings, right? Yeah, we will share. Oh. Okay, and the exercise is no that you are having that Excel, no, that Excel if you share it, that we will work it out in our home actually. Okay, we will share. We no? will share the resources like most probably by Saturday. Okay, that now Rahul was having that Excel, right? Actually, if it is shared, it will be useful. Okay, we will definitely share. Okay, thank you. Yeah, okay then.